अब now slope is negative ना. As soon as the tangent become parallel to x-axis and change the direction, the slope will become positive ना बच्चे. देखो Yes, ma'am. इधर में पॉजिटिव हो गई, इधर में नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव फॉर मिनिमा. एंड फ्रॉम हियर लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव. As soon as tangent becomes parallel to x-axis, then it becomes negative, na? Yes, ma'am. So this is first derivative test. Now I'll explain you. And once we close this at point C, what is the direction? Sorry, what is the sign? ऊपर में भी और नीचे में both as positive, na? Positive. So this is point of inflection. Now I'll explain you what did we do. This is called first derivative test. Which test? First derivative. In this, what happens? When the slope is taking the local maximum value. Local means it's just like this. See, it's maxima over here for this neighborhood only. It's maxima over here for this neighborhood only. Right now? Minima is here, one Yes, minima is ma'am. here, one minima is here. So this is called local. That we check in the neighborhood only. And for this local is for open interval only. Remember this. Local maxima minima we take for open interval. Why open interval? Suppose I am taking 0 to 1 interval. Well, how do you mean that 0.0001 is taken or 0.00000 whatever you think of taken? You don't know this value, na? And this side also, how do you know this is 0.999 or 0.999999999? So might be whatever the value at this point, might be this is smaller than this, na? Here also the same thing. We don't know what is the point nearest to 0 and 1 and what is the value at that point. That's why we call it local. We are not sure that it can be more, less or more. Okay? Clear, बच्चे? Reason क्या है? Yes, ma'am. Why open interval is for local maxima minima? Because we don't know what is the minimum point this side and what is the maximum point this side. So we can't say what will be the value of as at those points because I can take 0.9999 infinitely many nines in between, right now? And I can't calculate the value at that. Same way I can't and I can take 0.00000000. What can smallest value I can think? So those value also can differ. That's why it's always open for local maximum minimum. So what is the first derivative test says? Now just in the GeoGebra, you have seen that in the curve, if left side is positive, right side is negative, it is maxima. And if left side is negative and right side is positive, that is minima, na? What does it mean? Yes, ma'am. That at the point dy by dx is positive, left. Suppose you are checking on 1 and 2. Right? At any point 1, suppose you are checking. At any point 1 you are checking. Then what will you check? 0.5 this side or 1.5 this side? Or 0 this side or 2 this side? Right now? So if this side Yes, ma'am. it is positive and this side it is negative, you will say there is local maximum. And if this side is negative, this side is positive, you will say local minima. This is your first derivative test. What is the second derivative test? That is, if d2y by dx square, that is negative, then it is maxima. And if d2y by dx square is positive, then you will say it is minimum. Minimum. Clear, bache? Yes, ma'am. So now come to the exercise. Find absolute is different from this. Absolute I'll explain later. First, let us do local only. Find the maximum and minimum value if any for the following function given as this. Now, in these type of function, you will not take any derivative test or anything.
You will just follow the question from here only. F of x is 2x minus 1 square plus 3. Can I make this term 0? If I take x is equal to half, what will be this? 2 into half minus 1. So isn't it this term will become 0? Yes. So what is the minimum value I am getting? 3, na? Yes. But if I take x is equal to 1 lakh, suppose whatever value you can assume largest over here. So isn't this value becoming something more near to Infinity. more, not infinity, you can say very large number, right now? Very large Yes. value. So isn't it approaching towards infinity if x is infinity, Yes. right now? Yes, ma'am. So I can't say there is any maxima because in finite value I don't know which will be the, but minimum is there. So 3 is minima but no maxima. Is this clear? How is it happen? Yes, ma'am. So according to this, what will be the next? Change into again the perfect square number. F of x is equal to 9x square. So I can write it as 3x whole square plus 2 into 3x. And here it is 12x. So I have to multiply it by 2 also to complete the square now. So now it is 12x. So B is Yes. 2, 2 ka square 4 minus 4 plus 2. How you understood what did I do? समझ आया बच्चे क्या किया? Yes, ma'am. क्या किया? मैम ये फर्स्ट 3x² का आपने दोबारा फिर से डेरिवेटिव प्लस में करा है. नहीं बेटा डेरिवेटिव नहीं किया मैंने, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया. 9x स्क्वायर क्या होता है? 3x का होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर Yes. प्लस 2a. a अगर आपका ये है तो 2a आ गया ना. b क्या होना चाहिए कि वो 12 हो जाए? अच्छा, आइडेंटिटी आपने लगाई है. हाँ, b क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए ना. 2 2. हाँ, तो 2 अगर मेरे पास यहाँ पे है तो b स्क्वायर मुझे ऐड करना पड़ेगा ना. यस मैम. तो अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना. क्वेश्चन तो मैं चेंज नहीं यस. कर सकती. और प्लस 2 मुझे गिवन है. मैंने इस टर्म को, ये दो टर्म्स को आई हैव रिटन इट लाइक दिस, राइट? यस मैम. एंड प्लस 2 आई हैव. सो व्हाट आई एम गेटिंग? a square plus b square my plus 2ab. So isn't it a plus b whole square? यस मैम. Minus 4 plus 2 is minus 2. यस. So if I take x is equal to minus 2 by 3 over here, what will it get? 3 into minus 2 by 3 plus 2. Isn't it 0 again? यस मैम. So what a minimum value I am getting? -2 ना बच्चे? -2. Minimum. But maxima, यस मैम. again as x approaches to infinity, this 3x plus 2 whole square will also approaches to infinity ना? So no maxima. यस मैम. Clear बच्चे? यस मैम. Understand this thing मैम वी carefully. कैन डू विद डेरिवेटिव आल्सो, राइट? करके देखो. आप करो. dy by dx क्या आया? f dash x क्या आया? 18x plus 12. सेकंड यस. डेरिवेटिव क्या आया? 18. 18 which is positive. So minima. मिनिमा. हाँ, तो वैल्यू कैसे निकालोगे? वैल्यू कैसे निकली आपकी? लेट डेरिवेटिव बी 0. हाँ, 0. वेरी गुड. तो x इज इक्वल टू -2/3. तो डालो. वैल्यू यस. क्या आई? वैल्यू ऑफ x ये आई विल मेरे गेट पास -2. -2/3. सो 9 into 4/9 plus 12 into -2/3 plus 2. राइट? तो मेरे पास ये 9 से यस. 9 कैंसिल हो गया. यहाँ से 3 4 सा. तो 4 -8 plus 2 आ गई ना -2. वेरी गुड बच्चा. वेरी यस गुड. मैम. वेरी गुड. उससे भी कर सकते हो. अगला है, बट ये वाला ज्यादा इजी मेथड है बेटा. इससे आपको डायरेक्ट पता चल जाता है. ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे. +10. अब इसे मैं अगर x इज इक्वल टू 1 डालूंगी तो 1 - 1 0. इस वाले यस में मैम. तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या यस आई? मैम. 10. यस. मैक्सिमम 10 आई. 10. क्यों? मिनिमा मिनिमम है.
एक्स अगर अप्रोच इंफिनिटी की तरफ करेगा तो ये पूरी वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी ना, क्योंकि माइनस बाहर में चली जाएगी। माइनस है। तो नो मिनिमम। क्लियर बच्चे? मैक्सिमम वैल्यू इज 10, मिनिमम वैल्यू इज नो वैल्यू। नेक्स्ट, जी एक्स एक्स क्यूब प्लस वन। अब ना इसका मैक्सिमा है ना मिनिमा है। वाई? इफ आई टेक एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, g of x approaches to infinity ना। यस मैम। और if I take x approaches to minus infinity, so gx approaches to minus infinity ना। माइनस 1000 डाला तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा? 1000 विद माइनस साइन। कितनी जीरो? 9 जीरो। सो इफ आई इंक्रीज द जीरो एंड प्लस वन, so there is no minima, no maxima. Understood? As x approaches to infinity, gx approaches to infinity, and if x approaches to minus infinity, gx approaches to minus infinity. So there is no maxima, no minima for this. Clear? Hello? यस मैम। हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ जी। Find the maximum and minimum value for the following function. 2 का first part. This is f of x is equal to mod x plus 2 minus 1. Now remember, mod, if you have seen, isn't mod function is always like this? What is the definition of mod function? Take the break point of this, that is minus 2 na, at x is equal to minus 2 it will become 0 na. यस मैम। So minus of x plus 2 when x is less than minus 2, and x plus 2 when x is greater than or equal to minus 2, right? So this function, whatever value I take, it will always stay positive like this. So its range is always 0 to infinity, mod function. And if it is minus of this, then its range is minus infinity to 0, क्योंकि बाहर में माइनस हो गया। समझ आया? Mode यस function, मैम। if it is positive, its range is always from 0 to infinity, right? And if it is minus mode function, it can be minus x plus a can be any number, beta. It's always this, it will start from x axis. And if it is minus x plus a, this will be inverted one, this one. Clear? यस So मैम। if this is 0 to infinity and I am adding minus 1, so what will be the minimum value or maximum value? बताओ। विच वन मैम? ये वाला फर्स्ट पार्ट, ये है 0 टू इंफिनिटी, उसमें से माइनस 1 कर दिया तो 0 से एक माइनस 1 गया तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? माइनस 1 ना। माइनस वन है। और इंफिनिटी तो कुछ मैक्सिमा कुछ भी नहीं है ना, नो। राइट? नो मैक्सिमा, मिनिमा इज माइनस वन। माइनस 1। अब यहाँ पे चेक करो, इसकी अरेंजमेंट तुम्हें क्या बोली, क्या होगी? माइनस इंफिनिटी टू 0, राइट ना। यस मैम। इधर में ये वाला क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है 0। ठीक है बच्चे? हाँ यस जी। मैम। तो इसमें क्या हो गई मेरे पास? नो मिनिमा, माइनस वन बिकॉज लिख माइनस, हाँ जी, एक्स की। एक्स। यहाँ पे कोई भी मिनिमा नहीं है क्योंकि माइनस इंफिनिटी आ रहा है। माइनस इन्फिनिटी। बट उसमें 0 ओपन में 3 इंटरवल। ऐड करूंगी तो मैक्सिमा क्या हो गया? 3 ना। प्लस थ्री। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 3, मिनिमम वैल्यू इज नो मिनिमा, राइट? अब यस मैम। साइन एक्स 2x, साइन 2x प्लस 5, साइन रेंजेस बिटवीन -1 to 1 ना बच्चे। यस साइन मैम। वट एवर ग्राफ इट इज ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1 ना, राइट ना। यस मैम। अगर उसमें 5 ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा?
4, और इधर में, इधर में 6 हो जाएगा। हाँ, तो मिनिमम क्या हो गया 4, मैक्सिमम क्या हो गया 6। क्लियर। अब इधर में यस मैम। देखो इसका क्या है, साइन 4x+3 एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका क्या हो जाएगा। मैं इसमें साइन के इंटरवल में +3 ऐड कर दें। पहले आपने लिया साइन, देखो साइन 4x फ्रॉम -1 to 1, उसमें 3 ऐड किया, तो आपके पास से क्या हो गया -1+3 2 साइन and 4। 4x+3 एंड 1+3, तो ये हुआ 2 साइन 4x+3 4. Already this is positive, so no need to make the absolute value, na. Minima is 2, maxima is 4, na. यस मैम। And next क्या है, x+1। x+1 -1 एंड ओपन। हाँ जी, अब मैंने आपको क्या बोला था, ओपन इंटरवल में हाउ डू आई नो दिस इज -1 की नियरेस्ट अप्रोच वैल्यू कौन सी है, वी आर नॉट श्योर ना। यस मैम। -0.99999 कितने बार छोटी ली है, कितनी बड़ी ली है, यू डोंट नो ना। So there is no यस मैम। minima, no maxima for this. For open interval, you can't say. क्योंकि आपका देखो फर्स्ट डेरिवेटिव भी 1 आ रहा है, ठीक है ना। यस मैम। क्लोज इंटरवल में आई कैन से, बट ओपन इंटरवल आई कांट। ठीक है बच्चे। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, f(x)=x²। हाँ जी, x² है, वट एवर वैल्यू आई विल टेक, माइनस और x नेगेटिव और पॉजिटिव, what will it get, positive ना। यस मैम। So there is this side, it is if x approaches to infinity, x² will approach to infinity na. यस And मैम। if x approaches to -infinity, still x² will approach to infinity. So isn't यस। the range is this 0 से infinity, नेगेटिव नंबर तो आएगा ही नहीं ना बेटा। यस मैम। तो इसके मिनिमम क्या हो गया 0, मैक्सिमा नो लिमिट, नो लिमिट। राइट ना। So no यस मैम। maxima, but minima is 0. Next, gx x³ -3x। अब आप लगाओ उसमें डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें आपको इजीली लग जाएगा। तो g' क्या हो जाएगा 3x² 3x² -3। +3। तो इसको 0 डाला तो आपके पास क्या आया, x² = 1, so x = +-1। g"x करो, क्या आया 6x। 6x। हाँ, अब x = 1 डालोगे, g"1 is 6 पॉजिटिव, सो मिनिमा ना। मिनिमा। And g double dash at -1 it is -6, so -6 maxima। मैक्सिमा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से, राइट बच्चे। और वैल्यू कैसे यस आएगी, मैम। g1 कितना आया 1 -3 -2, और g -1 में कितना आया -1 +3। -4। नो बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, देखो ना, g हाँ -1 ओके डालो, ओके, x इज आल्सो ओके। तो -1 -3 इंटू -1, तो 2 आ गया ना। तो मिनिमम वैल्यू यस क्या मैम। आई -2, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 2। 2। क्लियर। यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ रहे हैं बच्चे। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज h(x) that is equal to sin x plus cos x. So what is the derivative of this? cos x minus sin x। Make it equal to 0. So this is cos x is equal इक्वल to sin sin x। x, or tan x I can write is equal to 1, 1। right? So x is equal to, but when we can write 1 as tan pi/4। हाँ, x is equal to pi/4 ना, because the interval is 0 to यस pi/2, मैम। देखो। So that is x is equal to pi/4. Now double यस dash, मैम।
h डबल डैश x इज cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन माइनस कॉस एक्स। वेरी गुड. So can I write minus of sin x plus cos x? Sin pi by यस मैम 4 plus cos pi by 4, no? यस मैम Both values are 1 by root 2. So isn't it 2 वन by बाई रूट minus टू 2 by root 2 हो जाएगा ना? 1 by root 2 plus 1 by root 2. यस मैम So 2 by root 2 और minus root 2 ना? Negative. यस मैम Therefore maxima. मैक्सिमा और वैल्यू क्या आई? मैक्सिमम वैल्यू क्या आई? h pi by 4 sin pi पाई बाई by फोर 4 plus cos pi by 4, right? So this is 2 by root 2 or root 2 is the maximum value. Clear बच्चे? यस मैम Next question, fifth part. Fifth part में क्या करेंगे बोलो? f of x that is equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 15, right? f dash यस x क्या हो जाएगा? बोलो. 3x² माइनस 12x प्लस 9 Plus 9. If you equate this is equal to 0, you will get 3 common. So x square minus 4x plus 3 is equal to 0 now. यस मैम So x values are, what are the values? X minus 3 and x minus 1 na? यस मैम So x is x equal इक्वल to 3 and 1 1 and 3. Now second derivative. Bolo. So second 6x माइनस 12 6x minus 12. Right. So now put the value 1. F double dash and 1 क्या हुआ? 6 minus 12 minus 6 negative. So maxima at x is equal to 1, x right? 1 यस मैम अब 3 डालो. F double dash 3. That is 18 minus 12. 6 positive. So minima at मिनिमा x is equal to 3. और वैल्यू क्या आई मैक्सिमा मिनिमा? जब f of x में आप 1 डाल दोगे तो मैक्सिमा आ जाएगा और जब f of 3 डालोगे तो मिनिमा आ जाएगा. राइट? वो चेक कर लेना. यस राइट बच्चे? क्या हो जाएगा? 1 यस मैम minus 6 plus 9 plus 15. So 25 minus 6 19 ना? वो मैक्सिमम वैल्यू आ यस गई. मैम और 19 मिनिमम वैल्यू क्या आई? 3 3 27 minus 9 6 are 54 plus 27 plus 15. दोनों में नेगेटिव आ रही है. मिनिमा एट 3 आ रही है ना? चेक करो. ये तो यहीं पे हो गया. 3 cube is 27 minus 6 into 9 is 54. 27 plus 15. So 27 cancel. So this is coming 15. 15 is the minimum value. 19 is the maximum value. 15 is the minimum value. Clear बच्चे? यस मैम Next. ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लोगे. आगे चलें. यस मैम आगे चलें. यस अब मैम अगले में देखो. ये कह रहा है ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स. फोर्थ क्वेश्चन. डोंट हैव मैक्सिमा और मिनिमा. क्यों? एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूं तो दैट इज ई रेज टू पावर एक्स ex अगेन ना. इफ आई कैन आई पुट yes एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0? नो, बिकॉज ई it एक्स इज cannot be नेवर possible 0. इट इज नेवर 0. नेवर 0. its value e always lies between 2 and 3. E value. E can never be negative 0. Okay, bache? So we yes ma'am can't find out maximum or minimum from this because no criteria for this. Then log x g of x is equal to 1 by x. So x can't be 0, na? yes ma'am So if it I does not take exist f dash x is equal to 0, I am getting 1 by x is equal to 0 implies 1 is equal to 0. not defined It's, yeah, so not absurd values giving, right? yes ma'am So next, x cube. You कर लिया है. You have done this chapter, बच्चे. yes ma'am Very good. So this is getting revision. X cube plus x square plus x plus 1. So h and dash for x us is, sir taught using derivative हाँ डेरिवेटिव से कर रहे हैं ना बेटा.
अब देखो, अगर मैं इसको 0 करूं तो मेरे पास क्या आया, 3x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। क्या बनाएंगे फैक्टर, प्रोडक्ट 3 और सम 2 हो ही नहीं सकता ना, तो इसको आप इस टाइप से करो, -2 ± b² - 4ac/2a। देखो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स ना, मैम x इज मैम नॉट यू रियल। यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला राइट? हाँ, x इज नॉट रियल, क्योंकि मेरे को फैक्टर्स नहीं समझ आए। आई जस्ट वांट टू कंफर्म दैट देयर इज नो फैक्टराइजेशन फॉर दिस, सो व्हाट डिड आई डू, आई हैव पुट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। So क्वाड्रेटिक I am फॉर्मूला। getting the discriminant not real na, यस discriminant is मैम। not real na, so x is not real, therefore we can't find maxima or minima। clear बच्चे? यस मैम। हाँ जी, next जो है that is absolute। now for absolute we will do the same method only, we will find first derivative, then equate it to 0, and then no second derivative test. Whatever values of x we will get, and these intervals we will include and find maxima or minima. So check how, f of x is x cube, x belongs to -2 to 2, closed interval, which you just check, absolute is always on close and local is always on open। f dash x क्या आया, 3x² ना, 3x²। so if I put x² is equal to 0, 3x² is equal to 0, I am getting x is equal to 0. x = 0। So what are the values I have, x, -2, 0 and 2. Means I'll take this value as well as these values. So now f of -2 is 4. Sorry, no, -8. Sorry. If you put f is equal to -2, -2 cube, na? So -8. F of -8। 0 is 0 and f of 2 is 8. So what is the absolute minima? -8. What is the -8। absolute maxima? 8. 8। अगला चेक करो, f of x is sin x plus cos x. X belongs to 0 to 5. Closed interval again. So f dash x cos x minus sin x equate equal to 0. So what are you getting? Cos x is equal to sin x, na? यस मैम। So can I say tan x? Again, always change into tan. Tan x is equal to 1. So in 0 to x = 5, π/4। x is equal to pi/4. Why? Because in the second quadrant, tan becomes negative, right now? So नेगेटिव what are यस। the x values now? 0, pi/4 and 5. You will check the values at this. So what will be that? F of 0 is sin 0, 0, cos 0, 1. 1। So 1. Sin f of pi/4, that is 1 1/√2। by root 2 plus 1 by root 2. So earlier we have found this is root 2 यस। and f of pi, that is sin pi is again 0 and cos pi is -1, na? So -1। value is -1. So minima is, absolute minima is -1. Absolute maxima is root 2, because root 2 value is 1.414. Right now? Clear, बच्चे? यस मैम। यस मैम। Next. Next question is part 3. F of x is 4x minus x square by 2. X belongs to, again, closed interval -2 and 9/2. Find f dash x. 4 minus 2x by 2, na? यस मैम। So I am getting 4 minus x. So x is 4. If f dash x is 0, so x you will get as 4, na? So 4.
So what are the values you are getting? -2, 4 and 9/2, right now? To find out the values, f of -2, f of 4 and f of 9/2, and check which one is maxima and which one is minima. Clear बच्चे? Hello. Yes, ma'am. Next, sixth question. You know how to do What, ma'am? question number 6. Fourth part I am leaving for you. This you will Okay. try. Sixth question. What will you do? Maximum profit means you have to maximize it. Px is this is the function. So what will be p dash x? बोलो बच्चे. -72 minus हाँ 36x. हाँ. So वैल्यू क्या आई p dash x को 0 करने में? -2. -2 ना. हाँ. अब सेकंड डेरिवेटिव क्या आया? -36. Which is always less than 0 ना. Yes, Therefore ma'am. maximum profit. -36. So what is the profit? P of -2. That will be 41 minus 72 into -2 minus 18 into -2 का square. So 41 Yes, ma'am. plus 144 minus 18 for the 72. Right? 72. So this will be Yes, ma'am. 72 plus 41. How much? 72 plus 41. 1 and 113. So this is the maximum profit. Okay, बच्चे? Yes, ma'am. Now, there was no interval, so it was local. Here the interval is given 0 to 3. This is again absolute. Right now, बच्चे? See, there was no interval given, so it was open interval only. So this profit we were getting was local maxima minima. But here the interval is closed now. So again, you will do the same thing. Let us complete Yes, ma'am. this. Question number 7. Tell me the derivative fast. Question number 7. हाँ जी. 3x4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25. So tell the derivative. 12x cube आवाज नहीं आई. minus 24x square plus 24x minus 48. हाँ जी. 12x cube minus 24x square plus 24x minus 48. Right? So Yes, if I ma'am. put this is equal to 0, I am getting 12 common. Right now? So x cube Ma'am. minus 2x square plus 2x minus 4 is equal to 0 now. So what can I do? How can I factorize this? Anything Taking you are x getting? common. Anji, how will you factorize this? One way is the hit and trial method. Put x is equal to 1, 2, 3. You have done the hit and trial method. Yes, ma'am. Other way, if you see, I am getting x square common and x minus 2 from here and x minus 2 from here, right now? Yes, ma'am. Then x square plus 2, x Ha, minus 2 and x x minus 2. minus 2 and x square plus 2, right? Yes, ma'am. So x, one value is x is equal to 2 and another if I take x square is equal to minus 2. Will I get Minus any root. real value? No. No, na? Not real? Yes, ma'am. So reject this. Rejecting this value. So only x is equal to 2 we will take. 2. ठीक है बच्चे? And now Yes, second ma'am. derivative test. f double dash x क्या हो जाएगा? बोलो. 36x square हाँ जी. minus 36x 48x square plus 24. minus 48x plus 24. And if I put x is equal to 2, f double dash x 2 will be 36 into 4 minus 48 into 2 plus 24. So what will be that?
144 minus 96 plus 24. So isn't it positive? Yes, ma'am. So minima, Yes, ma'am. minima na? And what will be Yes, the ma'am. minimum Minima. value? Put this 2 in f of 2. Find out the value. Clear, बच्चे? Yes, ma'am. Next. अच्छा sorry ये तो बच्चे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा है sorry नाउ f of 2 0 सेकंड डेरिवेटिव करना ही था इसमें सॉरी बच्चे दिस इज नॉट लोकल ना so absolute maximum because closed interval is given बच्चे see check the closed interval is given so what the values you are getting 0 2 and 3 3. so find out f of 2 f of 0 and f of 3 one value will be maxima absolute maximum one value will be minima. Minima. I had question was not visible now, so we didn't check. This is 0 to 3 closed interval, so we can't check the second derivative test over here. What will we do? We will just find out x value and using this x and these interval last points, we will find out the maxima or minima, right? Yes, ma'am. There is no written absolute maxima minima. How will you understand? If the interval is open, then it is local. If interval is closed, this is absolute. Clear, बच्चे? Ma'am. Next. Again, this is what? My meeting is going to end. Okay. I'm sending the another one.